there, warm welcome. You're watching the Election Premier League here on Times Now's Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Deka. Lots lined up for you in this bulletin. Of course, tomorrow there are going to be polling in 2 of the states. But before that, let's take you across to Rajasthan, where the stage is, of course, set. And it's just a few days left for the Rajasthan Assembly elections as well, which are going to take place on the 25th of November. Well, voting will be taking place for 200 seats, and the results will be out on the 3rd of December together with the other states. Now, in today's EPL episode, we will be bringing in a special report from the Siwana Assembly constituency. The Siwana seat is situated in the Barmer district of Rajasthan. The Congress has fielded former Minister Jaswant Singh's son, Manvendra Singh, from this seat against BJP's Hameer Singh Bhayal. Now, Hameer Singh Bhayal had won the seat in the 2018 elections in this constituency, securing over 50,000 votes. However, the vote margin was only 957 in 2018. Now, this is going to be a close contest on the Siwana seat between the Congress and the BJP. Will the BJP be able to retain Siwana, or will the Congress wrest power from the BJP? In fact, we've spoken exclusively to Congress's candidate Manvendra Singh, who's confident of a win. Watch this. सर, कांग्रेस ने आपको इस सीट पे भेजा है, कैसे देखते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे देखते हैं? हमीर सिंह भायल साहब जो हैं अच्छा होल्ड रखते हैं यहाँ पे, आपको कांग्रेस ने यहाँ डाला है, अब कैसे देखते हैं? हर चुनाव एक चुनौती होती है, तो आई लुक एट इट एज सेम, एक चुनौती है। ये एरिया कोई नया नहीं है अपने लिए, पहले भी हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र का रहा है, और वैसे भी मेरा गांव यहाँ से नज़दीक है और पुरानी रिश्तेदारी है, संपर्क है, तो इतना कोई वैसे चैलेंज नहीं है, नए एरिया के हिसाब से चैलेंज नहीं है। पिछली बार तो झालावाड़ भेजा था, जो एरिया जिला मैं कभी देखा ही नहीं था लाइफ में, और अब की बारी अपना ही जिला है, अपना ही एरिया अपने गांव के पास ही है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. But the rebels are hurting both the parties in Rajasthan. Whether you talk about BJP, Congress, there have been a lot of issues with the rebels. Yeah. If you see for the BJP, the Chittorgarh issue has been Big. in front of you. Yeah. If you see the Congress, there have been issues here also. Yes. How do you see that? Rebel is a phenomenon in every election, and there is no scientific formula for the perfect nomination of a candidate. It's not, the Indian system doesn't follow the normal the international parliamentary norms, where the local constituency decides the candidature. So it's a challenge, but some of the candidates do carry their own weight, and there are other external forces that decide the nomination. So yeah, it can harm the party depending on which one it is. So I can't, as of now, you can't say who's going to hurt more, but definitely they do hurt. You have been in both the parties, and so how do you see the ideological difference now? Because a lot of dimensions have changed when you talk about central leadership coming to Rajasthan, and now there are a lot of trips planned of if your party's high command and BJP's high command. Yeah. How do you see the ideological shift happening coming from Delhi to Jaipur? Delhi to Jaipur, I mean, ideological shift, geography doesn't influence ideology. The ideological factor, prevails across the country, pretty much across the country, depending on which party you belong to or you subscribe to. I won't say that, the divisions are as clear as they used to be. It's more easy to define them as sectarian versus non-sectarian, and that's the division, the broad division I would put it at in today in India, and it's a phenomenon that is global also. So Manvendra Singh is always known for putting his voice forward. Whether you talk about your issues with your former party, you have put your voice forward and you have put your step forward. Yeah. Now, coming back to this, you have also advised in Kargil as an advisor as far as I'm Chief, right. Yeah. So, how do you see the schemes that have been brought up by the central government? We talk about Agniveer and anything else. Do you see and do you expect some changes to happen, or do you advocate some changes that might should be there? Because Congress has been always vocal about the Agniveer scheme. And I think Agniveer is a big disaster for the country. There's a very simple formula that if a system works, then don't tamper with it. And clearly the army system works better in India than any other system.
and it didn't require any tampering. And in any case, the Agniveer proposal was not an internal proposal. It came from the Finance Ministry rather than from the Defence Ministry. And anything which is determined by finance rather than security relations or security assessment is going to be a disaster. And Agniveer is going to be a disaster in the long run. From the basic, most important combat formation is the section. And if you look at what's going to happen to the section from the Agniveer recruitment proposals, it's very difficult. I have last two questions for you. Yeah. One is of ticket distribution, because whenever we ask CM Ashok Gehlot about the ticket distribution, he has said he said that tickets are given on the basis of surveys. But as I also saw you, I was following you. You started your campaigning from your seat that there were projected seat that you would get that, but you are shifted to this particular seat. So it doesn't seem like the surveys have no, in that sense. No. In that sense, the survey was a factor from the beginning, and I was told about this seat also, right from the beginning. It's not alien in that sense. But I won't say that all nominations are based on surveys. But in this matter, if you're asking for me personally, that survey thing is not alien. I mean, it was part of the proposal from the beginning. The elections are coming near, and not much days are left. 8 to 9 days are left. Yeah. The red diary is still haunting this political phenomena. The 4 pages were released by the media outlet also yesterday. Yeah. How do you see that? Because the BJP High Command has always been ready to talk about Amit Shah, Narendra Modi. In all of their Jan Sabhas, they have one major issue, two major issues basically: the women's safety and this particular red diary. How do you see that? Unfortunately, you can make allegations about women's safety. It's not, it's not special to Rajasthan, or it's not special to any party. It's a ghastly thing that happens across the country, and there's, no government which is immune from that stain. And secondly, as far as red diary is concerned, it's not an issue here at all. I mean, not in this district, not in this area, and I think it's a figment of somebody's imagination that is being played around. But the Rajasthan polls this time around is not just about the Congress versus BJP. AIMIM has also entered the Rajasthan poll fray. Eyeing the 10% Muslim voters in the state, Owaisi's party has fielded candidates on 13 of the seats for this assembly election. In fact, in an exclusive interview with Times Now, Owaisi hits out at the Gehlot government, accusing him of neglecting the Muslim population. He's also said that hate crimes against Muslims have been on the rise under the Gehlot government, and pitched his party as the viable alternative. इन दिनों एआईएम के प्रमुख ओवैसी जयपुर की सड़कों पर है। जमील खान हवामेल प्रत्याशी हैं, उनके साथ हैं। लोगों से मत की गुहार करते घूम रहे हैं। जहां रुकते हैं वहां एक मजमा लग जाता है। ओवैसी साहब, क्या लगता है, हवामेल में बड़े दिग्गज कांग्रेस और बीजेपी के भी मौजूद हैं, एक नई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हवामहल विधानसभा में यहाँ पर बेहाली है, बदहाली है, कोई ड्रेनेज का, सीवरेज का इंतजाम नहीं है, गंदा पानी रोडों पर बहता है, साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, रोड नहीं है, एक गंदगी साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। तो फिर क्या, किस बुनियाद पर कांग्रेस और बीजेपी वोट मांगने आ रही है यहाँ पर? भाई, कई बरस तो आप ही के पास रहा, आपने कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। आप जाकर देखिए, ड्रेन्स खुले हैं, बारिश होती है तो पूरा एरिया तालाब में तब्दील हो जाता है। तो बहुत बुरा हाल है, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आप राजस्थान में 30 से 40 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन संख्या कम रह गई है। वैसा है ना कि हम लड़े तो क्यों लड़े, और जब लड़ते हैं तो इतना कम क्यों लड़ रहे हैं आप? तो हम जो भी फैसला करते हैं अपनी पार्टी को सामने रखकर, पार्टी के लोगों से मशवरा करके और उनकी रजामंदी से वो फैसले होते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ प्रमुख भूमिका में रही हैं, वो क्यों आपकी पार्टी को लोग वोट देंगे? क्या ऐसा आपको लगता है कि ये वजह है, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे? कांग्रेस और बीजेपी से लोग तंग है, लोग एक विकल्प चाहते हैं, ऑल्टरनेट चाहते हैं, तो मुतबादिल चाहते हैं, और एमआईएम पार्टी उस स्पेस को जो है या अवेलेबल है उसको फुल करना चाहती है, पुर करना चाहती है। लेकिन सर, बीजेपी कहती है कि ओवैसी कांग्रेस को नुकसान करेंगे, कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी की भी पार्टी।
अब इन दोनों को बैठ के तय करना चाहिए, किसी जगह पर आप बिठा के कुछ चाय वाय पिलाइए। अब इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है। अभी मैं जो संख्या देख रहा हूँ यहाँ पे माइनस लोग भी बहुत ज्यादा झंडे उठाए चल रहे हैं, ओवैसी नारे लगा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में वोट में तब्दील हो पाएगा? हम पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं राजस्थान में। शुरुआत अच्छी है और हमारे पूरे पार्टी के मेंबर जिम्मेदार मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ से एमएलए की सीट जीते। मुझे यकीन है कि हवा महल हो या जितने विधानसभा हो, वहाँ की जनता हमको इत्मीनान करेगी, भरोसा करेगी और हमको वोट देकर कामयाब करेगी। एक आखिरी सवाल मेरा, लाल डायरी की बड़ी चर्चा है राजस्थान में। नहीं तो बहुत करप्शन भी तो है यहाँ पर, बहुत करप्शन भी तो है और उसी करप्शन का नतीजा आप देख रहे हैं। जहाँ खड़े हैं आप और हम खड़े हैं, वहाँ देख लीजिए, आप भी तो चल रहे हैं। ये कोई इंसानों की रहने की बस्ती है बताइए आप? तो डिलिबरेट टारगेट किया गया इनको। कहा जाता है कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ओवैसी के इस सियासी खेल में बच्चों की काफी भरमार रहती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज्यादातर वो बच्चे हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर चल रहे हैं जो मतदाता नहीं हैं, जो माइनर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर है। यही वजह है कि टॉप व्यू से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवैसी जिस जमीन पर अपना धरातल तराश रहे हैं वहाँ की हकीकत क्या है, वहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, ये बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओवैसी मौजूद हैं, हवा महल के प्रत्याशी जमील खान मौजूद हैं और झंडे लिए, तख्तियाँ लिए आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे तख्तियाँ लिए हाथों में चल रहे हैं। और यहाँ भीड़ कितनी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जयपुर एक राजधानी है, वहां पर हवा महल एक बहुत हॉट सीट में गिनी जा रही है, जहां बाल मुकुंदाचार्य जैसे हिंदू फायर ब्रांड बीजेपी की तरफ से हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता आर तिवारी मैदान में हैं, वहां जमील खान को उतार करके एआईएमआईएम भी अपना धरातल तलाश रही। जरा वाइड करके पूरा व्यू दिखाने की कोशिश मैं करता हूं कि देखिए, लोग भले ही अपने मोबाइल में उनको कैद करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मत पेटी में ये वोट कितना कैद हो पाएगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान की अल्पसंख्यक आबादी की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि इस धरातल पर ओवैसी जो जमीन तलाश रहे हैं उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं ओवैसी यहाँ मीडिया से भी मुखातिब होते नजर आ रहे हैं और भीड़ जो है वो उनको देखने के लिए लाइट है और अपनी सियासी जमीन तलाशते हुए ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं। Well, this is just a little bit of what we are doing on the ground. On the other side, we are going to get you more details. This time around, it is from Telangana, which is the other state which is going in for polls. Stay tuned.